Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to start with our next type of thing, that is words for the week, which we do every week. So today I have 7 words, so you can note down these words in your notebook. That I have already told you that make one separate notebook to note down these, and if you will note down this, it will be great. And now you all know that what are the benefits of writing this. So this will increase your vocabulary, grammar skills, and you will be knowing some new words which you don't know. Some of you might know some words that this is known as this, I know this before, but some words are different, maybe you don't know, so you can note down that also. So let's begin with today's video. So the first word is livid. Now what does this mean? Livid means extremely angry, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, angry. If you want to denote or represent one person that is very angry, very furious, very enraged. So what are these words that I have now spoken? Okay, that like furious, enraged, these are synonyms of angry. Okay, furious, enraged, these are synonyms of angry. So if you want to note down these, so you can note down this also. But otherwise this particular word livid means extremely angry, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा angry हो कोई person, then we can say livid instead of saying he is very angry, he is extremely angry with us. So you can simply say livid. So I have written one example also, that is I was so livid I just ripped up the letter. मैं इतने गुस्से में था कि मैंने letter ripped up कर दिया, मतलब tear कर दिया, turn out कर दिया, means फाड़ दिया. Okay, मैंने उस पेज को या उस लेटर को फाड़ दिया, मैं इतना एंग्री था. Livid means extremely angry, means I was so livid I just ripped up the letter. Okay, or you can say I just torn out the letter or tear up. So these all are similar. So livid means extremely angry, and I was so livid I just ripped up the letter. So I hope you understand this also, that what does this mean, livid. So livid is similarly, livid means extremely angry. I was so livid I just ripped up the letter. So I hope this first word clears to you, and let's move on to the second word, that is, let me write that first and then I will be telling you. So the second word is moniker. In first word I have told you livid, so I have forgot to tell you the pronunciation. So the pronunciation of first word, that is livid, means livid. Livid is the pronunciation. I hope that is clear to you, and let's move on to the second. So second is moniker. So we pronounce it like moniker. Okay, moniker को हम pronounce करते हैं moniker, and the meaning is a name or nickname. Means you all know that in families, means every family, parents used to say their names. Some parents used to make some nicknames of their children, make nicknames for the children. So here this is the word that is denoting that is moniker. Means moniker means a name or nickname. Like आपको पता है कि family members जो हैं वो nickname देते हैं बच्चों को कि हाँ मैं इनको इस नाम से बुलाएंगे घर पे. बाहर तो कोई और ही नाम होता है, like if you will say, so बाहर तो कोई और उनका full name ही होगा, but घर में in home parents used to take nicknames. So the word for nickname you can say moniker. अगर आपको बोलना होगा कि nickname, अगर कोई relative आया, what is his nickname, so you can simply say
instead of saying this, what is his nickname, you can say what is his moniker. What is his moniker? This will give you good impression. In every video I've told you this. So moniker means a name or nickname. And example is, he earned the moniker Mittu from his friends. He earned the moniker मतलब इसको किसी पर्सन को, ही इज अ नाउन मीन्स कोई पर्सन है. ही अर्न द मॉनिकर मित्तू फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. उसके फ्रेंड से उसको निकनेम पड़ा है मित्तू. वेट, टू एक्सपैंड दिस यू कैन से फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स. सो लेट मी राइट दैट ऑल्सो, फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स. सो he earned the moniker Mittu from his friends and family members. So here particularly Mittu is a nickname of a child or child, yes. So moniker of this person of he is Mittu. He earned the moniker Mittu from his friends and family members. उसके friends और family members से उसे ये नाम दिया गया है Mittu. That is a nickname. So moniker means he, a nickname or a name or a nickname. He earned the moniker Mittu from his friends and family members. So I hope this word second is also clear to you. There are many nicknames. I have just chosen this, and there are many like Nonu and many more. So you can take that, you can write whatever you feel in sentence. So here particularly this particular word is mentioning a name or a nickname. So I have just written one example. So let's move on to the third. I hope this is also clear to you. They are very small and very easy words, okay? So the third word is doppelganger. Okay, doppelganger. We pronounce this word like, we don't pronounce this word like doppelganger. Doppelganger. We pronounce this word like doppelganger. Doppelganger. Okay, doppelganger. This is the pronunciation for this particular word, that is doppelganger. Doppelganger. And what's this meaning? The meaning is someone who looks like someone else. Someone, कोई जो किसी और की तरह दिखता हो, who looks like someone else. Someone who looks like someone else is known as doppelganger. So someone who looks like someone else is known as doppelganger. So doppelganger. Doppelganger. I am repeating this word again and again. Doppelganger. So remember this pronunciation also. Doppelganger. So someone who looks like someone else. एक कोई person जो किसी और person की तरह दिखता हो. Like doppelganger. You can say that this word. So like, it's not similar to that, means twins. If you will say twins, so ये उससे related है but not same as twins. Okay, so someone who looks like someone else is known as doppelganger. And I have written one more meaning, meaning नहीं, example. So firstly, जो एक person जो किसी और person की तरह दिखता हो उसे हम doppelganger कहते हैं. They are not twins. Okay, so I have written this example, that is, at the mall today I saw someone who could be a doppelganger. At the mall में मैंने देखा आज कि I saw someone who could be your doppelganger. वो तुम्हारा doppelganger, तुम्हारे जैसा दिखने लगा था. Okay, वो could be your, could be. Okay, ये नहीं बोला है कि वो तुम्हारे जैसे ही दिख रहा था. Could be, वो तुम्हारे जैसा दिखता हो सकता है. ओके, मैंने एक पर्सन देखा मॉल में. एट द मॉल टुडे, आज मैंने एक मॉल में एक पर्सन देखा. वो कुड बी योर डॉपलगैंगर. वो तुम्हारी तरह दिखता था, वो शायद तुम्हारा डॉपलगैंगर हो सकता है. मीन्स डॉपलगैंगर हो सकता है. सो हियर डॉपलगैंगर इज द word and we have used that word in our sentence. So at the mall today I saw someone who could be your doppelganger. So वो could be और could be याद रखना. कोई समझेगा कि जल्दी में जिसने पढ़ना होगा तो he will be saying, हाँ एग्जाम्पल में ये लिखा होगा कि मॉल में मैंने तुम्हारे जैसा ही एक पर्सन देखा. नो,
यहाँ पे लिखा मॉल में ही मैंने आज एक मॉल में मैंने एक पर्सन देखा, वो जो है वो तुम्हारा डॉपलगैंगर हो सकता है, वो कुड बी योर डॉपलगैंगर. ओके, so I hope this third word is also clear to you. So let's move on to the fourth word. So the fourth word is very very easy, that is lazy bones. That is lazy bones. Lazy bones means lazy, a person who is lazy. So lazy से ही पता चल रहा है lazy bones का मतलब क्या होगा, lazy, the person who is lazy. So if you remember, I have made one video of synonyms of lazy, so you can check out that also, but I have missed this word there, so you can note down this word there also and you can do here also. Okay, so lazy bones means someone who is behaving in a lazy way, जो lazy की तरह काम कर रहा है, मतलब आलसी. lazy का हिंदी में होता है आलसी. okay, lazy bones means someone who is behaving in a lazy way, जो lazy way की तरह behave कर रहा है, मतलब बिल्कुल आलसी. who don't want to work anything, the person who don't want anything and he can't do anything means simply he is not in a state where he used to do work. okay, he is the person who thinks that he should sleep only and eat only and then sleep also, so that is a lazy means जो आलसी हो, मतलब एक पानी की बॉटल भी अपने आप खुद नहीं उठा सकता, means he don't want to work and he don't want to do any work. okay, simply I have told you in explanation that what is lazy and there is synonyms in my previous video. You have to check out that video. I will be posting that link in description, so you can check out from description box. So lazy bones means someone who is behaving in a lazy way, जो एक आलसी की तरह behave कर रहा है. So here I have written one example, that is he is a lazy bones with no ambition. Now what do you mean by ambition? Ambition is a word that is used for goals, means you have to set one goal for your life, that what would you want to become or how or something like that, means simply goal. Ambition, sapna, not sapna, sapna will be dream, so ambition means simply goal. He is a lazy bones with no ambition, वो एक lazy person है जिसका कोई goal ही नहीं है. He has no goal at all. नाउ ये गोल वो वाला गोल नहीं कि फुटबॉल में गोल कर दिया, नो. गोल मतलब जो हमें हमारा एक है कि हमें बड़े होकर ये करना है, मीन्स व्हाट डू यू वांट टू बिकम, समथिंग लाइक दैट, कि हमें क्या करना है बड़े होकर, व्हाट इज अवर गोल. सो ही इज अ लेजी बोन, ये एक लेजी पर्सन है जिसका कोई एम्बिशन नहीं है, हु हैज नो गोल एट ऑल इन हिज लाइफ. सो हियर दिस lazy bones is depicting in the sentence. And you can say one more example, that is lazy bones का हम example ले सकते हैं like hey lazy bones, like I am saying hey lazy bones, get up from sofa and help me with the dishes. okay, so this is a sentence just. okay, and I hope this fourth word is also clear to you. Here lazy bones means a person who is lazy, you can simply say this. And example is he is a lazy bones with no ambition. okay, so I have told you 4 words. Now let's move on to the 5th, 6th and 7th. like first I will be telling you 5th. so the 5th word is wallflower. So the pronunciation of this particular word is wallflower. You can say wallflower, but wallflower will be little good. okay, wallflower. so wallflower means, अब आप डर मत जाना कि हाँ इतनी बड़ा मीनिंग इसका, इसको छोड़ो अगला वर्ड देखेंगे. नो, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड वॉलफ्लावर. एंड ये मीनिंग कोई इतना बड़ा नहीं है. द मीनिंग बस यही कह रहा है कि बस वॉलफ्लावर जो है वो एक तरह से एक शाय पर्सन को डिनोट करता है, मतलब द पर्सन वो इज शाय. ओके, मतलब जो शर्मीला है. सो wallflower, और इसमें क्या लिखा है, someone at a social event. Now what is social event? Social event like your parties and all. So parties, any type of parties or anything जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, एक social event, डांस वगैरह होता है. So someone at a social event who has no one to dance with or to talk to, जो एक social event पे है और उसके साथ कोई डांस नहीं, who has no one to dance.
किसी के साथ डांस करना नहीं है, विद और टू टॉक टू, और किसी से बात भी नहीं करनी. ओके, ना उसको कोई पर्सन मिल रहा है डांस करने के लिए, ना उसने किसी से बात करनी है. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड वॉल फ्लावर. मीन्स ऑफन बिकॉज दे आर शाई, क्योंकि वो शाय होते, शर्मीले होते, तो नहीं पूछते हैं. ओके, सो इट इज वॉल फ्लावर इज सिंपली डिनोटिंग अ शाय पर्सन. And you should know this meaning also, that someone at a social event. Now हम इस मीनिंग को याद कैसे करेंगे? अगर बाई चांस हमें मीनिंग याद करना है तो वैसे तो समझ आ जाना चाहिए, जैसे मैं बता रही हूँ. वॉल फ्लावर, अगर आपको मीनिंग याद करना है तो मैंने क्या बताया कि किसी सोशल इवेंट में डांस वगैरह, ओके, या बात करना, तो वो शाय पर्सन नहीं करते, क्योंकि वो शाय होते हैं इसलिए नहीं करते. तो इसमें भी यही कहा गया है, समवन एट अ सोशल इवेंट. सो मेक मीनिंग समवन, कोई, सोशल इवेंट में, समवन एट अ सोशल इवेंट who has no one to dance, जिसके पास कोई नहीं है डांस करने के लिए, who has no one to dance or to talk to, और किसी से बात करने के लिए, often because they are shy, क्योंकि वो शाय है इसलिए. someone at a social event who has no one to dance or to talk, often because they are shy, क्योंकि वो शाय है. so wallflower means a shy person who has no one to dance or to talk with. okay, at a social event. so example is, ये नहीं कि social event ही मतलब like I have written this example. I used to be a wallflower, मैं एक wallflower की तरह होती थी. at school always shy and insecure, हमेशा शर्मीली और insecure. so this is just an example. I used to be a wallflower at school, मतलब बहुत shy, always shy and insecure. सो मैं एक वॉल फ्लावर होती थी, मतलब एक पर्सन होती थी जो कि शाय होती थी. सो आई यूज टू बी अ वॉल फ्लावर एट स्कूल, स्कूल में ऑलवेज शाय एंड इनसिक्योर, हमेशा शाय और इनसिक्योर. ओके, सो दिस इज अ सेंटेंस फॉर मीन्स एग्जाम्पल फॉर दिस particular word wallflower. So I used to be a wallflower at school, always shy and insecure. So this is just an example. So I hope this word is also clear to you. मतलब कोई भी at a social event, someone at a social event who has no one to dance or to talk with, often because they are shy. And example is, I used to be a wallflower at school, always shy and insecure. So I hope this word is clear to you, and let's move on to the sixth word. Okay, so sixth word is also very easy. That is, so the sixth word is clutter. Pronunciation is also this, clutter, clutter. Okay, utter word सुना होगा आपने, वैसे ही clutter, 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 not cull. Okay, clutter, clutter. Example, meaning is a lot of objects. This is not a meaning. This is I have written this in brackets. ओके, सो अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब काफ़ी ऑब्जेक्ट्स होंगे. तो मतलब क्या है मेन इसका, अ स्टेट ऑफ बीइंग अनटाइडी, मतलब अ थिंग दैट इज अ स्टेट दैट इज अनटाइडी. मतलब अगर इफ यू आर गोइंग टू वन रूम एंड दैट इज अनटाइडी, सो यू कैन सिंपली से क्लटर मीन्स दैट विल बी अनटाइडी रूम ना. सो अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें, काफ़ी चीज़ें होंगी बेडरूम में या फिर कहीं पे भी. इफ़ यू विल टेक एग्जाम्पल ऑफ किचन, आई हैव रिटन एग्जाम्पल ऑफ किचन ओनली. सो अगर आप किचन का एग्जाम्पल लोगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक ग्रिडल, कॉल्ड्रन एंड मेनी मोर, स्पून्स एंड वगैरह वगैरह, सो ऑन. ओके, सो क्लटर मीन्स अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ स्टेट ऑफ बीइंग अनटाइडी, जहाँ पे सारी चीज़ें हौच पौच हो रखी हैं, बहुत ज़्यादा क्योस हो चुका है. सो अ स्टेट ऑफ बीइंग अनटाइडी, तो उसे हम क्लटर कहते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें नीटली नहीं होती है. नीटली का ऑपोजिट है अनटाइडी. ओके, बिल्कुल बेकार, गंदा कर रखा है. सो एग्जाम्पल इज, सॉरी अबाउट द क्लटर इन द किचन, मतलब जो अनटाइडीनेस, जो गंद है किचन में, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और सॉरी. ओके, सॉरी अबाउट द क्लटर इन द किचन, मतलब सॉरी अबाउट द क्लटर. क्लटर, व्हाट इज क्लटर? अ स्टेट ऑफ बीइंग अनटाइडी, मतलब वो चीज़ जो है वो अनटाइडी है. सो स्टेट ऑफ बीइंग अनटाइडी इज नोन एज क्लटर. एंड एग्जाम्पल इज, सॉरी अबाउट द क्लटर इन द किचन, किचन के क्लटर के लिए सॉरी मीन्स अनटाइडी जो मैंने कर रखा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. ओके, सो सॉरी. आई होप दिस
क्लटर वर्ड इज ऑल्सो क्लियर टू यू. इसका बस यही मतलब है, क्लटर का याद करो कि क्लटर इज अ थिंग यूज्ड फॉर, मतलब अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू represent untidiness, मतलब गंद, और you can say opposite of neat means untidy only. So example is sorry about the clutter in the kitchen. So आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, sorry about the clutter in the bedroom. So anything, okay. And I hope the sixth word is also clear to you. So the seventh word is, that is, so the last word and the seventh word is frivolous. This is the wrong pronunciation, because everyone first, if you will read this word, you will be pronouncing it like frivolous, 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 so something like that. But the correct pronunciation, these pronunciation that I have now spoken is wrong, absolutely wrong, and the correct pronunciation of this particular word is frivolous, frivolous, frivolous. Okay, frivolous. Frivolous is the correct pronunciation for this particular word, frivolous. You can break these words, break the words of this word. Okay, frivolous. So frivolous, what does this mean? It simply means behaving in a silly way and not taking anything seriously. मतलब silly चीजें करे जा रहे हैं, मतलब सिली चीज, ओके, सिली वे में बिहेव कर रहे हैं, एंड द पर्सन हु इज नोन एज फ्रिवलस डजंट टेक एनीथिंग सीरियसली, मीन्स ही टेक एवरीथिंग एज अ फन, ओके, बट सम थिंग्स यू शुड टेक सीरियसली, ओके. बिहेविंग इन अ सिली वे एंड नॉट टेकिंग एनीथिंग सीरियसली. सिली वे में बिहेव करना और किसी भी चीज को सीरियसली ना लेने को हम फ्रिवलस कहते हैं. Okay, frivolous. So frivolous means behaving in a silly way and not taking anything seriously. So this is the meaning of this particular word, and the example I have also written, that is, student who consider test instructions to be frivolous often fail exams. Okay, students who consider test instructions to be frivolous often fail exams. Like, meaning is also saying like this only, that is, अगर students जो है वो टेस्ट इंस्ट्रक्शन को इतना अच्छे से नहीं करते, बट अगर वो नहीं फॉलो करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को, मतलब इंस्ट्रक्शंस टू बी फ्रिवलस, उनको वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो सिली लगती है और वो सीरियसली लेते ही नहीं है. ओके, ये तो ऐसी ही है, हम तो कर लेंगे. So frivolous, this type of mentality of students is not good. Okay, so students who consider test instructions to be frivolous, जो उन test instructions को silly and they're not taking that seriously, often fail exams. वो exams fail भी कर देते हो जाते हैं, वो exams में fail भी हो जाते हैं. Like, अगर test instruction में होगा कि चीटिंग नहीं करनी है, सो मैनी ऑफ यू मे डू चीटिंग देयर ऑल्सो. सो वहाँ पे चीटिंग की, और बाई चांस अगर टीचर आपको पकड़ लेती है, इफ टीचर कॉट यू, देन व्हाट विल हैपन? शी और ही विल बी डूइंग, मीन्स either they will deduct marks like less 5, whatever you will score, you will get -5 from that. मतलब 5 जो है उसमें से subtract कर लेंगे. Either they fail, you are fail as you have done cheating. This is a test instruction. Some of teachers this says. So this is the example of frivolous. जहाँ पे जो इस एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने देख रखा है कि जो स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी है वो फ्रिवलस है, मतलब वो कोई भी चीज़ सीरियसली नहीं ले रहे हैं, एंड दे टेक एवरीथिंग सिली. ओके, सो स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट इंस्ट्रक्शंस को फ्रिवलस वे में लेते हैं, मतलब सिली और सीरियसली नहीं लेते हैं, वो एग्जाम्स में फेल भी हो जाते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल. सो फ्रिवलस, आई होप दिस वर्ड फ्रिवलस ऑल्सो
understand. You understand, I guess, this word frivolous. Frivolous की pronunciation frivolous है. I am speaking this again because many of you will say frivolous. Note, frivolous, and less. Frivo नहीं है, frivo है. Okay, so behaving in a silly way and not taking anything seriously. इतनी बार मैं बोल रही हूँ, आपको तो अभी याद हो जाएगा ये सारी चीजें. Example, students who consider test instructions to be frivolous often fail exams. So I hope these all 7 words are clear to you. Let me recap these all words. Okay, first word is livid, means extremely angry, बहुत ज़्यादा गुस्सा. And example क्या दिया था? I was so livid, I just ripped up the letter. मैं इतना ज़्यादा angry था कि मैंने letter को फाड़ दिया. I have torn that letter or tear that letter. I was so livid, I just ripped up the letter. And second word is moniker. Moniker means a name or a nickname given to you. So I have taken nickname Mittu. That is, he earned the moniker Mittu from his friends and family members. And the third word is lazy bones. Lazy bones का तो मतलब आप इसके word से ही, the word itself says that it is lazy. So lazy का मतलब lazy means lazy bone का मतलब होता है lazy person, means someone who is behaving like an lazy way, in a lazy way. And example मैंने बता दिया था, he is a lazy bones with no ambition. And fourth word is doppelganger. Doppelganger. So doppelganger means someone who looks like someone else, जो किसी और की तरह दिखता है. Okay. So example भी मैंने आपको दिया था that yes, at the mall today I saw someone who could be a doppelganger. मैंने मॉल में देखा था, I saw someone who जो है वो तुम्हारी तरह ही देखने को लग रहा था. वो कुड बी और डॉपलगैंगर, वो तुम्हारा डॉपलगैंगर हो सकता है, तुम्हारी तरह दिखने वाला हो सकता है, जो मैंने अभी मॉल में देखा था. एंड फिफ्थ वन इज वॉलफ्लावर. वॉलफ्लावर मीन्स अ शाय पर्सन, मीन्स someone at a social event who has no one to dance or to talk with, often because they are shy. So example भी मैंने आपको दिया था that I used to be a wallflower at school, always shy and insecure. And this is the example of this wallflower. And sixth word is clutter. Clutter means untidiness. So a lot of object means a state of being untidy. तो clutter का मतलब क्या होता है? A state of being untidy. Example क्या दिया था? Sorry about the clutter in the kitchen. Sorry about the clutter in the kitchen. And last word, that is 7, is frivolous. So frivolous means behaving in a silly way and not taking anything seriously. Students who consider test instructions to be frivolous often fail exams. जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शन को फ्रिवलस मतलब सिली वे में और सीरियसली नहीं लेते हैं, वो एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं, ऑफन फेल इन एग्जाम्स. So I hope these all 7 words are clear to you with meaning and with examples. I have given you full details. So I hope you like this video. If you like this, do like, share, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.